Welcome back, champions. Today we are going to start exercise 2.2. In the last video we completed exercise 2.1. In that video we discussed how to solve linear equations. Today we learn word problems. So here is our first question. If you subtract 1 upon 2 from a number, multiply the result by 1 upon 2, you get 1 by 8. So how we are going to solve this? For subtract 1 upon 2 from a number, हमें किसी नंबर में से 1 upon 2 माइनस करना है. तो सबसे पहले we'll suppose the number. So write let the number be x. Now according to question, if you subtract half from a number, हमने नंबर x सपोज करा है, इसमें से हाफ माइनस कर दिया. नेक्स्ट वो कह रहा है एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 1 upon 2. नाउ विल मल्टीप्लाई दिस आंसर विद 1 upon 2. यू गेट 1 by 8. सो हमें क्या मिलेगा 1 by 8. नाउ हाउ विल सॉल्व दिस? सबसे पहले ये ब्रैकेट के बाहर दिस इज इन मल्टीप्लीकेशन 1 by 2 and I told you in last video that whenever a fraction is in multiplication and we transfer it to the other side, we reciprocal it. So we are going to follow the same rule. X minus 1 upon 2 is equals to 1 by 8 multiplied by 2 by 1. So we can cancel them. 2 1s are 2 4s are. Now we are having x minus 1 upon 2 is equals to 1 by 4. Now next we will transfer this minus 1 by 2. So x is equals to 1 by 4 plus 1 by 2. Take their LCM. So LCM of 4 and 2 will be 8. Now 4 2s are and 2 4s are. Add them. 4 plus 2 6. 6 by 8. We can cancel them with the table of 2. So 3 by 4 is your answer. I hope this is clear to you. Now let's move on to next question. The question is the perimeter of a rectangular swimming pool is 154 meter. एक rectangular swimming pool है जिसका perimeter given है 154 meter. Its length is 2 meter more than twice its breadth. So first of all, what is given? We'll write it down. Perimeter so I have written what was given to us. Now we are having a condition. Its length is 2 meter more than twice its breadth. Means length is dependent on breadth. So हम breadth को suppose करेंगे. Let breadth be x. Now if you took breadth as x, so its length will be, so its length is 2 meter more than twice its breadth. So 2 plus 2x is the length. Now what is given? Perimeter is given. So we'll write the formula of perimeter. So according to question, what is the formula of perimeter of rectangle? That is 2 into length plus breadth. Now we'll put the values. Perimeter is given to us 154 meter. In place of length we'll write 2 plus 2x and in place of breadth we'll write x is equals to 154 meter. Now 2x plus x will give you 3x. So 2 into 2 plus 3x is equals to 154 meter. Now this 2 is in multiplication. So when you will transfer it to other side, it will go in division. So 154 divided by 2. So 2 1s are, 2 7s are 14, 2 7s are 14. Now we are having 2 plus 3x is equals to 77 meter.
Now this 2 is in addition. When you will transfer it, it will go in subtraction. So 77 minus 2. So 3x is equals to 75. Now 3 is in multiplication, so it will go in division. So x is equals to 75 divided by 3. 3 ones are 3. Now we'll divide 75 with 3. 3 twos are 6. 1 carry. Here it becomes 15 and 3 fives are 15. So the value of x is 25. So यहाँ से आपको क्या मिल गया? वैल्यू ऑफ ब्रेथ. ब्रेथ कितनी है? 25 मीटर. अब हमें लेंथ कैलकुलेट करनी है. लेंथ इज इक्वल्स टू 2 प्लस 2x. x क्या है? ब्रेथ, जिसकी वैल्यू अभी कैलकुलेट करी 25 मीटर. नाउ विल पुट दैट वैल्यू. सो 2 प्लस 2 इंटू 25 बिकॉज x इज इन मल्टीप्लीकेशन विथ 2. नाउ विल सॉल्व इट. 25 2s are 50 plus 2. So the value of length is 52 meters. I hope this question is clear. सबसे पहले आपको क्वेश्चन पढ़ के इक्वेशंस फॉर्म करनी है. Then you have to solve it by putting in the formula. Now let's move on to next question. Now our next question is, the base of an isosceles triangle is 4 upon 3 centimeter. The perimeter of triangle is 4 whole 2 by 15 centimeter. What is the length of either of the remaining equal side? ये एक isosceles triangle है. What is an isosceles triangle? जिसकी 2 sides equal होती हैं. Rather than base, base को छोड़ के बाकी की जो 2 sides हैं वो equal होती हैं. So what is given? हमें बेस दिया है 4 upon 3 सेंटीमीटर एंड पेरीमीटर गिवन है. पेरीमीटर क्या होता है ट्राइंगल में? सम ऑफ ऑल साइड. एंड द क्वेश्चन इज आस्किंग अस टू कैलकुलेट द रिमेनिंग इक्वल साइड. सो सबसे पहले जो आपको कैलकुलेट करना है, विल सपोज इट. सो विल राइट. सो लेट द लेंथ ऑफ द इक्वल साइड ऑफ ट्राइंगल बी x. According to question, perimeter of triangle is equals to 4 whole 2 by 15 centimeter. So we'll solve it. 15 4s are 60. 60 plus 2 62. So perimeter is 62 by 15. And what is the formula? Sum of all sides. So here these two sides are x now. So x plus x plus third side is given to us 4 by 3 centimeter. Now in next step we'll transfer this. यहाँ पर ये x और x 2x हो जाएगा is equals to 62 by 15 minus 4 by 3. Now LCM of 15 and 3 will be 15. So 2x is equals to. Now 15 will go one time by 15. So 62 minus 3 से 15 5 times जाता है. तो 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 20. अब 2x minus 20 क्या मिलेगा? 42 upon 15. अब नेक्स्ट स्टेप में हम इस 2 को ट्रांसफर करेंगे और ये 2 मल्टीप्लीकेशन में है. सो दिस विल गो इन डिवीजन. सो x इज इक्वल्स टू 42 अपॉन 15 मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन 2. अब इस 2 से ही कैंसिल हो जाएगा. 2 1s are 2. इधर 2 2s are 4. 2 1s are 2. नाउ 21 अपॉन 15. इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं 3 के टेबल से. So 3 7s are 21 and 3 5s are 15. So जो लेंथ चाहिए थी हमें इन साइड्स की वो मिल गई 7 by 5 सेंटीमीटर. दोनों साइड्स इक्वल होंगी तो दोनों की लेंथ सेम होगी. आई होप यू आर गेटिंग दीज क्वेश्चंस. अगर आपको क्वेश्चन समझ आ रहे हैं सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन.
Now our next question is sum of two numbers is 95. दो numbers है हमारे पास जिनका sum 95 है. If one exceeds the other by 15 और जो एक नंबर है वो दूसरे नंबर से 15 ज्यादा है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक नंबर सपोज कर लेंगे. लेट वन नंबर बी x. अब जब आपने एक नंबर सपोज कर लिया तो आपके क्वेश्चन में कंडीशन गिवन है दैट अदर नंबर इज एक्सीड बाय 15, मतलब जो दूसरा नंबर है वो 15 ज्यादा है. सो यू विल राइट अदर नंबर बिकम्स, क्या बन जाएगा वो, x प्लस 15. नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ने क्या कहा था हमें कि इनका सम जो है, सम इज इक्वल्स टू 95. सो x प्लस 15 दोनों नंबर्स को ऐड करके 95 मिलेगा. नाउ x प्लस x क्या हो जाएगा, 2x, और प्लस 15 इज इक्वल्स टू 95. अब जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें हम 15 को ट्रांसफर करेंगे. ये प्लस में था तो उधर जाके माइनस होगा. सो 2x इज इक्वल्स टू 95 माइनस 15. तो इसको माइनस करो. 5 माइनस 5 0, 9 माइनस 1 8 इज इक्वल्स टू 2x. ये 2 मल्टीप्लीकेशन में है तो डिवीजन में जाएगा. सो x इज इक्वल्स टू 80 अपॉन 2. इसको कट कर देंगे. 2 1 जा, 2 4 जा 8, 2 0 जा 0. तो x की वैल्यू क्या आ गई, 40. मीन्स जो ये फर्स्ट नंबर हमें चाहिए था वो है 40, और जो सेकेंड नंबर चाहिए वो क्या है, 40 से 15 ज्यादा. मीन्स 40 में 15 ऐड करेंगे. सो 40 प्लस 15, 0 प्लस 5 5, 4 प्लस 1 5. सो जो सेकेंड नंबर हमें चाहिए दैट इज 55. सो जो दो नंबर्स क्वेश्चन में चाहिए थे वो है 40 एंड 55. नाउ लेट्स सॉल्व इट्स नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है टू नंबर्स आर इन द रेशियो 5:3. इफ दे डिफर बाय 18, व्हाट आर द नंबर्स. दो नंबर्स है, उनका रेशियो गिवन है हमें और उनका डिफरेंस गिवन है. डिफर मीन्स उनका डिफरेंस. सो हम जब भी आपको क्वेश्चन में नंबर्स रेशियो की फॉर्म में गिवन हो तो उनके साथ x लगा के उनको एज अ नंबर सपोज कर लेते हैं. सो हम लिखेंगे लेट टू नंबर्स बी इन द क्वेश्चन देयर डिफरेंस. सो विल राइट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डिफरेंस ऑफ नंबर्स is 18. So numbers क्या है, 5x और 3x. So 5x minus 3x is equals to 18. 5 minus 3 2. So 2x is equals to 18. 2 is in multiplication, division में जाएगा. So 18 by 2. 2 से 9 टाइम्स कैंसिल हो गया. अब हमें नंबर्स की वैल्यू फाइंड करनी है. तो नंबर्स क्या है, 5x और 3x. सो 5x मीन्स 5 मल्टीप्लाइड बाय x और x की वैल्यू क्या आई है यहाँ से 9. तो वन नंबर इज 45 एंड सेकेंड नंबर इज 3x. सो 3x इज इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाइड बाय 9. सो 3 9s are 27. तो जो दो नंबर्स हैं दे आर 45 एंड 27. I hope this question is clear. Now let's move on to next question. So next question is 3 consecutive integers add up to 51. These numbers, 3 numbers है जिनका sum 51 given है and we need to find the value of these integers. So सबसे पहले हम इनको suppose कर लेंगे. So let
3 consecutive integers b अब 3 नंबर्स हैं और कॉन्जिक्यूटिव है, मतलब एक के बाद एक है। तो अगर फर्स्ट नंबर x है तो सेकेंड x प्लस 1 होगा और थर्ड नंबर x प्लस 2 होगा। दिस मीन्स कॉन्जिक्यूटिव, एक के बाद एक, लाइक 1 2 3 दे आर कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। अब हमें क्वेश्चन बोल रहा है देयर सम इज 51। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x plus 1 plus x plus 2 gives us 51. So x plus x will give us 3x plus 1 plus 2 gives us 3 is equals to 51. Now we'll transfer this 3. So 3x is equals to 51 minus 3 when you'll subtract it. So 1 carry 11 minus 3 gives us 8. Here it becomes 4, so 48. Now 3 is in multiplication, so x is equals to 48 divided by 3. So 3 ones are 3, 1 carry, this becomes 18. Now 3 6 are 18. So value of x is 16. And our 3 numbers are x plus 1 and x plus 2. So 16. And the value of x plus 1 will be 16 plus 1, that is 17. And the value of x plus 2 is 16 plus 2, that is 18. So 3 consecutive integers are 16, 17 and 18. I hope this question is clear. Now let's move on to next question. Now our next question is the sum of 3 consecutive multiples of 8 is 888. Find the multiples. यहाँ पर भी हमें consecutive numbers लेने हैं, but we need to take multiples of 8. So क्या करना है, just जो consecutive numbers हमने suppose करे थे, हर एक number को 8 से multiply करना है. So 3 consecutive numbers will be now here our consecutive numbers are 8x, 8x plus 1 and 8x plus 2, and according to a question their sum is 888. Now what is common in these three numbers? 8. So we'll take 8 out. And what is left from each number we are going to write it inside the bracket. So पहले number से x बचा, second number से x plus 1 and third number से x plus 2 is equals to 888. अब ये जो 8 है मल्टीप्लीकेशन में, सो विल ट्रांसफर इट. यहाँ पर कितने x हैं, 3x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 888 डिवाइडेड बाय 8. सो इसको डिवाइड कर दो 8 ones एंड इट विल गो 111 टाइम्स. नाउ 3x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 111. Now this 3 will go on the other side और इसको हम माइनस कर देंगे 111 में से. So 3x is equals to 108. When you are going to subtract 11 में से 3 माइनस करोगे 8, 0 का 0 and this 1 will come downside. Now next step we are going to divide 108 by 3. So 3 ones are 3, 3 threes are 9, 1 carry, this becomes 18 and 3 6 are 18. So value of x is 36, but 8 x plus 1, in place of x we got the value 36, so 36 plus 1, so 8 multiplied 37. अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 7 8 are 56, 5 कैरी, 8 3 are 24 plus 5 29. So 296 सेकेंड नंबर है.
अब हम थर्ड नंबर की वैल्यू फाइंड करेंगे 8. So in place of x we'll write 36 plus 2. So 8 multiplied by 38. Now we'll multiply it. 8 8 is 64, 6 carry, 8 3 is 24 plus 6, 30. So 3. So here we calculated the value of two multiples of 8, but the first number which we suppose was 8x. So we'll find the value of 8x also. 8 into 36. 8 6 is 48, 4 carry, 8 3 is 24, 24 plus 4 28. So here are three consecutive multiples of 8, 288, 296 and 304. I hope this question is clear. Now let's move on to next question. Our next question is, three consecutive integers are such that when they are taken in increasing order and multiplied by 2, 3 and 4 respectively, they add up to 74. Find these numbers. इस क्वेश्चन में 3 consecutive integers है, जिसको आप जब increasing order या ascending order में लिखोगे और इनको consecutively पहले नंबर को 2 से, सेकेंड नंबर को 3 से और थर्ड नंबर को 4 से मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे तो जो आंसर आएगा that will be 74. So सबसे पहले you have to suppose consecutive integers. So let 3 consecutive integers be. So 3 consecutive integers are x, x plus 1 and x plus 2. अब क्वेश्चन कह रहा है कि अगर आप x को 2 से मल्टीप्लाई करो, so 2 into x. x plus 1 को 3 से मल्टीप्लाई करो, so 3 and bracket x plus 1 and x plus 2 को 4 से मल्टीप्लाई करो, so 4 and bracket x plus 2 and इन तीनों को ऐड करने पे the answer you will get will be 74. So let's multiply them. 2x plus 3x plus जब ब्रैकेट ओपन होगा तो दोनों से मल्टीप्लाई होगी, 3 1 is 3 plus 4x plus 4 2 is 8 is equals to 74. Now we'll add integers together and constant together. So 2x, 3x and 4x इन तीनों को ऐड करेंगे. 2 plus 3 5 plus 4 9. So 9x plus 8 plus 3 11 is equals to 74. 11 will go on the right hand side. So 9x is equals to 74 minus 11. So 9x is equals to 4 minus 1 3, 7 minus 1 6. Now this 9 is in multiplication, so it will go in division. So x is equals to 63 divided by 9. So 9 7s are 63. So x की value क्या आ गई 7 and we need to find the value of 3 numbers. And what were the numbers? X, x plus 1 and x plus 2. So value of x is 7. X plus 1 means 7 plus 1 8 and x plus 2 means 7 plus 2 9. So 3 numbers which we need are 7, 8 and 9. I hope ये questions आपको clear है. Question number 9 is, the ages of Rahul and Harun are in the ratio, दो persons हैं Rahul and Harun, their ages are in the ratio 5:7. 4 years later, the sum of their ages will be 56. We need to calculate their ages after 4 years. Sum of their ages after 4 years is given to us. So first of all, we need to suppose their ages as it is given. The ages of Rahul and Harun are in 5:7. So in the last video also, I taught you that whenever it is given in ratio form, just take x with it. Like now here ages are given. So Rahul and Harun, 2 persons are there. Their ages are 5:7 means 5x and 7x.
So you will write in such a manner that let the present age of Rahul and Harun be 5x and 7x. Now what we need to calculate ages after 4 years. So 4 years later, now what will be the age of Rahul? Rahul's age will be 5x plus 4. Because after 4 years, he will be older than 4 years what he is today. And Harun's age will be 7x plus 4. Suppose you are of 12 years today and after 4 years or 4 years later your age will be 12 plus 4, 16. Same thing we are doing here. Now according to our question, what is given? The sum of their ages after 4 years. Now we are having their ages 4 years later. Now we need to do their sum. So according to problem, x plus 4, age of Rahul plus age of Harun, that is 7x plus 4 is equals to 56. Now we will solve this. We are having 5x and 7x. So 5 plus 7, 12, 12x plus 4 plus 4, 8 is equals to 56. Now this 8 will transfer on right hand side. So 12x is equals to 56 minus 8. Now subtract it. So we will take one carry, this will become 4, here it will become 16, 16 minus 8 will give you 8 and here 4, so 48. Now this 12 is in multiplication, so we will go in division, so x is equals to 48 upon 12. So 12 ones are 12, 12 fours are 48, so we are having value of x as 4. Now we need to calculate their present ages, which are 5x and 7x. So we will calculate the value of 5x and 7x. So the required age of Rahul, what was the age of Rahul? 4x. So they are in multiplication and the value of x is 4. So 4 into 4 gives us 16. So present age of Rahul is 16 years. Next is Harun. So present age of Harun is 7x. Value of x is 4. This is in multiplication with 7. So 7 into 4. 7 fours are 28. So the age of Harun is 28 years. I hope this question is clear to you. Now let's move on to next question. Now our question number 10 is the number of boys and girls in a class is in the ratio 7:5. The number of boys is 8 more than the number of girls. What is the total strength? So here number of boys and girls are given in the ratio and their relation is also given. So we need to calculate the total number of students. So for that we need number of boys and number of girls. So first of all we will suppose let the number of boys be. So let the number of boys be 7x because it's given 7:5 and the number of girls will be 5x. Now according to question, what are the condition given? They are saying the number of boys is 8 more than the number of girls. That is, the relation between the number of boys and girls is given in such a manner that the number of girls number of boys depends on number of girls. Now here we can solve it in two methods and I'll tell you easiest one.
You can suppose it like this. Number of boys is 8 more than number of girls. Means the difference is 8. जब number of boys में से number of girls को minus करेंगे तो 8 आएगा. तभी तो आप कह रहे हो कि boys girls से 8 ज़्यादा है. This is the condition given to us, so we'll solve it. Question condition is number of boys is 8 more than the number of girls. मतलब कि जो उनका difference है वो 8 का है. If boys are 20, girls will be 12. If boys are 10, girls will be 2. तभी तो इनका difference 8 है. This is just an example. इसकी solution नहीं है. Values अभी हम find करेंगे. मैं सिर्फ आपको explain कर रही थी कि इनका difference 8 है. So you need to understand the language of question. So 7x minus 5x is equals to 8. Now 7 minus 5 2x is equals to 8. X is in multiplication, will go in division. So x is equals to 8 upon 2. Now we'll divide it. 2 1s are 2, 2 4s are 8. So value of x is 8 here. Now we'll calculate the number of boys and girls. So number of boys are 7x. So we'll put 7 into 8 because 7 into x. And number of girls are 5x, 5 into 8. Value of x is 4 here. Now we'll calculate the value of number of boys and number of girls. So number of boys are 7x. So 7 into 4, that is 28. And number of girls is 5x. So 5 into 4 means 20. Now question is asking total strength. So total strength means total number of students. So total strength means total strength is equals to number of boys plus number of girls. So number of boys are 28, number of girls are 20. We'll add them to get our answer. 8 plus 0, 8, 2 plus 2, 4. So the total strength of the class is 48. I hope this question is clear. Now let's move on to next question. Now next question is, father is 26 years younger than Baichung's grandfather and 29 years older than Baichung. The sum of the ages of all three is 135 years. What is the age of each one of them? So what is given to us? Baichung's father relation is given to Baichung's grandfather and Baichung's father relation is given to Baichung. So here we'll assume the age of Baichung. So let the age of Baichung be x. Now what is given to us? Baichung's father is 29 years older than Baichung. So his father's age will be x plus 29. Person whose age we'll write as Baichung's grandfather Now understand this carefully. In a question they said that Baichung's father is 26 years younger than Baichung's grandfather. जो बाइचंग के फादर है 26 ईयर छोटे हैं उसके ग्रैंडफादर से. मीन्स जो ग्रैंडफादर है वो बाइचंग के फादर की एज से 26 ईयर्स ज्यादा होंगे. सो वी कैन राइट बाइचंग्स फादर एज प्लस 26. दिस विल बी द एज ऑफ हिज ग्रैंडफादर. So let's add them. So 9 plus 6, 15, 5, 1 carry, 2, 3, 4, 5. So x plus 55 years is the age of his grandfather. Now we are having all three ages. Baichung's age is x, his father's age is x plus 29 and his grandfather's age is x plus 55. Now next what is given in a question? Sum of the ages of all three. इन तीनों की एज का सम गिवन है that is 135. So according to problem,
Let's add their ages. Baichung's age is x plus 29 plus x plus 55 is equals to, what is given? 135 years. So 135. Now what we'll do, we'll add them. So x plus x plus x will give us 3x plus 29 plus 55. Let's add them. 9 plus 5, 14. 4 1 carry. 5, 6, 7 and 8, 84. So plus 84 is equals to 135. Now in next step, this 84 is an addition, so we'll transfer it on the right hand side and it will go in subtraction. So 3x is equals to 135 minus 84. Now let's subtract them. So 5 minus 4 gives us 1. 13 minus 8 gives us 5. So 3x is equals to 51. Now 3 is in multiplication, so it will go in division. So 51 divided by 3. Now let's divide it. 3 ones are 3. 5 minus 3 gives us 2. 1 will bring downside. Now 3 sevens are 21. So it will be divided 17 times. So the value of x is 17. That is, the age of Baichung is 17. Now we'll calculate the age of his father and his grandfather. So Baichung's age is x, which we supposed, and we got the value of x is 17 years. Next we need to find the age of Baichung's father. So Baichung's father, his age was x plus 29. Means 17 plus 29. So add them. 9 plus 7, 16. 6, 1 carry. 2, 3 and 4, 46 years. This is the age of Baichung's father. Next we need to find out the age of Baichung's grandfather. So his age was x plus 55. So we'll add the value of x is 17 plus 55. So 7 plus 5 gives us 12. 2, 1 carry. 5, 6, 7, 72. So grandfather's age is 72 years. I hope this question is clear to you. Now let's move on to next question. And if you are finding my videos helpful, please like, share and subscribe. Now let's solve our next question. Our question number 12 is 15 years from now, Ravi's age will be 4 times his present age. What is the relation given in this question? The relation of Ravi's age after 15 years to his present age is given. So we'll suppose the present age of Ravi as x. So Ravi's age is x. Now they are saying 15 years from now. तो अब हमारा next step होगा रवि की age 15 years बाद calculate करना. So his age after 15 years will be x plus 15. Now according to the question, what is given? 15 years from now, Ravi's age will be 4 times his present age. So 15 years के बाद वाली जो age है x plus 15, this will be equal to 4 times, मतलब 4 multiplied by Ravi's present age, which is x. So 4x. So 15 is equals to 4x. This x was an addition, तो ये उधर जाएगा तो minus हो जाएगा, minus x. So 15 is equals to 3x. 3 is in multiplication, तो ये division में आएगा. तो 15 divided by 3 कितने times जाएगा? 5 times. So the value of x is 5. And what a question is asking, what is Ravi's present age? This only we need to calculate. So we calculated the value of x, which is required in this question. I hope you are getting these questions very clearly. Now let's move on to next question.
Our next question is, a rational number is such that when you multiply it by 5 by 2 and add 2 by 3 to the product, you get minus 7 by 12. So let the required rational number be x. अब हमने नंबर सपोज कर लिया. सो अकॉर्डिंग टू अ क्वेश्चन व्हाट इट इज सेइंग, अ रेशनल नंबर इज सच दैट, ये एक रेशनल नंबर है, व्हेन मल्टीप्लाइड बाय 5 अपॉन 2, इसको मल्टीप्लाई कर दिया हमने 5 by 2 and the product, we got a product and now we need to add 2 upon 3. So we'll add 2 upon 3 to the product. Next it is saying you get minus 7 upon 12. So the final answer we are getting is minus 7 upon 12. So this is in multiplication. So 5x upon 2. This is an addition, so we'll transfer it, is equals to minus 7 upon 12 minus 2 by 3. So we'll solve this first. So 5x upon 2 is equals to LCM of 3 and 12 will be 12. So by 12 it will go one time only, so minus 7 into 1. Plus by 3, 12 will go 4 times, so 4 into minus 2. So 5x upon 2 is equals to minus 7. Now 4 2s are 8, but this is minus 8 and here we are having plus, so plus minus plus will become minus 8 upon 12. Now 5x upon 2 is equals to, we'll add them as minus minus is plus, so 7 plus 8 is 15, but we'll write it with the minus sign upon 12. Now here we are having a fraction and multiplication, so we'll transfer it. X is equals to minus 15 upon 12 multiplied by 2 upon 5. So we'll cancel them. 2 6 are 12, 5 3s are 15. So here the value of x which we are getting is, I'm writing it here, x is equals to minus 3 upon 6. We can cancel it further. ये common table में आते हैं 3 के. 3 1s are 3 2s are. Final answer is minus 1 by 2. This is the required rational number. Now let's move on to next question. So next question is Lakshmi is a cashier in a bank. She has currency notes of denomination 100, 50 और 10. लक्ष्मी एक कैशियर है बैंक में, उसके पास नोट्स हैं 100 रुपीज के, 50 रुपीज के और 10 रुपीज के. The ratio of the number of these notes is 2:3:5. So ये जो number of note लक्ष्मी के पास ये इस रेशियो में है एंड टोटल कैश जो उसके पास है वो है 4 लाख रुपीज. सो हाउ मेनी नोट्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन डज शी हैव. तो हमें पता करना है कि लक्ष्मी के पास 100 रुपीज की कितने नोट है, 50 रुपीज की कितने नोट है, 10 रुपीज के कितने नोट है. अब हमें नंबर ऑफ नोट्स तो गिवन है 2:3:5. तो इसको सपोज कर लेंगे एज 2x, 3x एंड 5x. So let the number of notes rupees 100, rupees 50 and rupees 10 notes be 2x, 3x and 5x. जैसे मैंने आपको बताया था, you have to take x with the numbers, you have to take x with the digits given in ratios. So अब next क्या होगा स्टेप, हमें क्वेश्चन में टोटल कैश दिया है, तो अब हम टोटल वैल्यू फाइंड करेंगे हर एक रुपीज वाले नोट की कि 100 रुपीज के टोटल कितना अमाउंट है, 50 वाला कितना है एंड 10 वाला कितना है. सो वी हैव टू मल्टीप्लाई. सो 100 मल्टीप्लाइड बाय 2x. तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख लेते हैं टोटल कैश इज इक्वल्स टू 4 लाख. सो 100 into 2x plus 50 into 3x
प्लस 10 into 5x is equals to 4 lakh rupees. So let's multiply 2 into 100, 200x plus 5 3s are 15 and 3 zeros are 0, 150x plus 10 5s are 50x is equals to 4 lakh. Now 200 plus 150 plus 50 इसको ऐड करेंगे. कैसे ऐड करते हैं? इजीएस्ट मेथड, 0 0 एंड 0. यहाँ पर तो 0 आ गया. नेक्स्ट 5 प्लस 5 10, 10 प्लस 0 10 ही होता है तो 0 यहाँ पे आ गया और 1 कैरी में. नाउ इधर कुछ है नहीं 100 प्लेस में, 1 कैरी वाला भी था. वी वर हैविंग 1 विच वी टुक कैरी. So 1 plus 1 2, 2 and 2 4. So 400x is equals to 4 lakh. Now x is equals to 4 lakh divided by 400. So these 0 will cancel these two 0. Now 4 ones are 4, 0 0 and 0. So the value of x is 1000. ये x की वैल्यू है. अब हमारे क्वेश्चन में हमें बोला था हमें हर एक नोट की वैल्यू बतानी है जो हमने सपोज किए कि कितने नंबर ऑफ नोट्स हैं. 2x है, 3x है एंड 5x है. सो जो 100 रुपीज नोट थे वो कितने थे? 2x. एंड वैल्यू ऑफ x अभी हमारे पास आई 1000. सो 2 into 1000. सो जो 100 रुपीज की नोट्स है वो कितने हैं? 2000 नोट्स है. नेक्स्ट था ₹50. सो 50 रुपीज के कितने नोट्स थे? 3x. x की वैल्यू हमें 1000 मिली, मीन्स 3 into 1000, 3000. तो जो 50 रुपीज की नोट्स हैं वो 3000 है. नेक्स्ट वो 10 रुपीज. तो 10 रुपीज के कितने नोट्स है? 5x and the value of x is 1000. So 5 into 1000. So 10 rupees के 5000 notes थे. So these are the number of notes available with Lakshmi in her bank. I hope ये क्वेश्चन क्लियर है. अगर एक बार में समझ नहीं आएगा तो वॉच इट 2 times. I'm explaining this again. क्वेश्चन क्या था कि लक्ष्मी एक कैशियर है, उसके पास 100, 50 और 10 रुपीज के नोट्स हैं उसके बैंक में. और वो कितने हैं? नंबर ऑफ नोट्स हमें रेशियो में गिवन थे 2, 3 और 5. जिससे सपोज कर लिया 2x, 3x एंड 5x. ये तो हमने नंबर ऑफ नोट सपोज कर लिए. अब हमने उसकी कॉस्ट निकाली. कॉस्ट कैसे निकाली? जो नंबर ऑफ नोट था और कितने का वो नोट था उसको मल्टीप्लाई करके. अब क्यों मल्टीप्लाई किया? अगर ये डाउट है तो सी. सपोज यू आर 5 फ्रेंड्स प्लानिंग फॉर अ पार्टी. आप सबने डिसाइड किया कि हम ₹10 लेके आएंगे. अब ये तो हो गया 10 plus 10, 20, 30, 40, 50. 50 रुपीज तो हमारे पास टोटल कलेक्ट हो रहे हैं. अब नंबर ऑफ नोट्स कैसे पता चलते हैं? इनको काउंट करके 1 2 3 4 5. ये हमें गिवन है क्वेश्चन में. तो नंबर ऑफ नोट्स को हमने x सपोज किया था. अब कितने रुपीज वाला है ये भी गिवन है. जैसे यहाँ पे 10 रुपीज वाला, तो हमने 10 से मल्टीप्लाई किया. मल्टीप्लाई करने पे क्या मिल रहा है? टोटल वैल्यू. आई होप कि आपको अब समझ आया होगा कि हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई क्यों करा था. दिस वन एरिया, दैट 100 मल्टीप्लाइड बाय 2x, दिस 50 मल्टीप्लाइड बाय 3x. इसको ध्यान से समझना, क्वेश्चन समझ आ जाएगा. नाउ लेट्स सॉल्व इट्स नेक्स्ट क्वेश्चन. So next question is, I have a total of 300 in coins. अब हमारे पास 300 रुपीज के कॉइन्स हैं. क्या डिनोमिनेशन है उनके? किस किस के कॉइन है? मतलब कितने रुपीज वाले कॉइन है? 1 रुपीज, 2 रुपीज और 5 रुपीज वाले कॉइन है. ए लास्ट क्वेश्चन तो हमारे पास डायरेक्टली रेशियो था, बट अब यहाँ पे हमें फाइंड करना है. दे आर सेइंग द नंबर ऑफ रुपीज 2 कॉइन्स. जो 2 रुपीज के कॉइन है इज 3 टाइम्स द नंबर ऑफ ₹5 कॉइन. जितने भी ₹5 के कॉइन होंगे 2 रुपीज वाले उससे 3 टाइम्स है. तो हम ₹5 वाले कॉइन्स को सपोज कर लेते हैं x. अब यहाँ पे ₹5 मत ले लेना वरना वो वैल्यू हो जाएगी उसकी. हमें नंबर ऑफ कॉइन्स लेने हैं. सो वील टेक लेट
द नंबर ऑफ ₹5 कॉइन्स भी x। एंड अ क्वेश्चन वाज सेइंग कि जो 2 रुपीज के कॉइन्स हैं, नंबर ऑफ ₹2 कॉइन इज 3 टाइम्स द नंबर ऑफ ₹5 कॉइन्स, तो 3x हो गए। हमें क्वेश्चन में स्टार्टिंग लाइन दे टोल्ड दैट वी आर हैविंग 3 टाइप्स ऑफ कॉइन्स, बट दे हैव गिवन इंफॉर्मेशन अबाउट 2 टाइप्स ऑफ कॉइन्स, सो डोंट गेट कंफ्यूज फ्रॉम हियर। अब ₹5 वाले कॉइन्स भी पता चल गया हमें कितने हैं, x है, एंड ₹2 कॉइन्स हैज 3x, दिस ऑल्सो वी नो नाउ। अब हमें ₹1 वाले जो कॉइन है इसके बारे में तो बताया नहीं कितने कॉइन्स है, बट दे गेव अस वन थिंग दैट टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स इज 160। If total number of coins is 160 means कि ये जो 1 रुपीज वाले कॉइन्स हैं, 2 रुपीज वाले कॉइन्स हैं, 5 रुपीज वाले कॉइन्स हैं, इन सबको ऐड करके ही टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स आया होगा। सो इनको ऐड कर लेते हैं, x प्लस 3x, सो x प्लस 3x प्लस यहाँ पे रुपीज, जो 1 रुपीज के कॉइन्स होंगे उनको ऐड करके आना चाहिए था 160। सो ₹1 कॉइन्स, so ₹1 coins will be 160 minus, इन दोनों को ऐड करो, 3x plus x4, so 4x. These are number of coins of ₹1. अब टोटल रुपीज भी गिवन है 300, कि मतलब इनको मल्टीप्लाई करने पे नंबर ऑफ कॉइन्स को उसकी वैल्यू से मल्टीप्लाई करने पे जो भी आंसर आता है उसको ऐड करोगे तो 300 रुपीज आएगा। जैसे मैंने अभी आपको इस एग्जाम्पल में समझाया था कि यहाँ पे हम क्यों मल्टीप्लाई करते हैं नंबर ऑफ कॉइन्स को उसकी वैल्यू से। सो सेम प्रोसेस विल डू हियर। सो सबसे पहले हम इनकी वैल्यू ही फाइंड कर लेते हैं। ₹5 वाले कॉइन्स कितने हैं, x, सो देयर वैल्यू आई एम राइटिंग हियर विद ब्लैक कलर इनकी वैल्यू। सो वैल्यू ऑफ 1 कॉइन इज 5 रुपीज एंड द नंबर ऑफ कॉइन्स इज x। सो टोटल कितना हो जाएगा, ये 5 into x मतलब 5x। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है 2 रुपए वाले सिक्के, कितने हैं, 3x है, तो इनको मल्टीप्लाई कर दो, 3 2 6, सो 6x। ये जो 5x और 6x आ रहा है ये वैल्यू है, ये वाली वैल्यू, जैसे ये 300 है ऐसे वाली ये वैल्यू है। नाउ नेक्स्ट इज 1 रुपीज वाले कितने हैं, 160 minus 4x, so we'll multiply them, so value of ₹1 coins is 160 minus 4x. Now we got all 3 values and हमारे पास क्वेश्चन में स्टार्टिंग में they have written that the total is 300. Now when we are going to add these 3 values, तो जो आंसर है वो हो जाएगा 300. So let's solve it. Now 5x, so according to the question or as per the condition given in the question, you can write any one of these. So 5x plus 6x plus 160 minus 4x is equals to 300. Now I want to suggest you one thing कि आप जब भी ये वाले क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन देख रहे हो तो जस्ट पॉज द वीडियो फॉर 1 मिनट, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो एंड सॉल्व इट विद मी इन योर नोटबुक्स, तो आपको ये क्वेश्चंस बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ओके, सो नाउ विल ऐड द वैल्यूज व्हिच आर हैविंग x. So 5x plus 6x gives us 11x minus 4x plus 160 is equals to 300. Now this 160 is an addition, इसको हम ट्रांसफर करेंगे और इधर 11 में से 4 माइनस करेंगे तो यहाँ पे हमें मिलेगा 7x is equals to 300 minus 160. Now 7x is equals to, subtracted, 0 minus 0 gives us 0. Here we'll take carry, so this will become 10 और ये 2 बन जाएगा. Now 10 minus 6 gives us 4. 2 minus 1 1, 140. Now x is equals to 140 divided by 7. So 7 ones are 7 twos are 14, 7 zeros are 0. तो x की वैल्यू तो आ गई 20. अब हमें क्वेश्चन में क्या पूछा था, हाउ मैनी कॉइन्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन आर विद मी. हमें नंबर ऑफ कॉइन्स बताने हैं कि कितने सिक्के हैं. सो नंबर ऑफ कॉइन्स फॉर ₹5 इज x. जो अभी वैल्यू हमने फाइंड करी 20. राइटिंग हियर, बॉक्स में लिख देती हूँ, कंफ्यूजन नहीं होगी. फॉर ₹5 जो नंबर ऑफ कॉइन्स हमने सपोज करे थे दे वर x एंड वी गॉट द वैल्यू ऑफ x इज 20. सो द नंबर ऑफ कॉइन्स फॉर ₹5 इज 20. जो नेक्स्ट रुपीज है वो है 2 रुपीज. सो 2 रुपीज के कॉइन्स कितने सपोज करे थे अभी हमने, 3x.
ये number of coins and 6x is the value. Confuse मत होना that why I am not taking 6x, because that is the value and we need here number of coins. So number of coins कितने हैं? 3x. So 3 into x means 3 into 20. So let's multiply. 3 0 to 0, 3 2 to 6. So 60 coins हो गए 2 rupees के. Now next word rupees 1 coins. So 1 rupees के coin कितने थे? 160 minus 4x. So 160 minus 4x. So 160 minus 4 into value of x is 20. So 160 minus 80, because 4 into 20 is 80. So the number of coins of rupees 1 were 80. So this is the required answer. I hope this is clear to you. Now let's solve its next question. So our next question is, the organizers of an essay competition decide that a winner in the competition gets a prize of rupees 100. एक competition है, उसमें winner को 100 rupees मिलेंगे. And a participant who does not win gets a prize of rupees 25. But जिसने participate किया है and is not able to win, उसको भी 25 rupees मिलेंगे. So total prize money distributed is 3000. जो total money उन्होंने distribute करे that is 3000. अब find the number of winners and if the total number of participants is 63. हमें winners find करने हैं अगर जो total जितने बच्चों ने participate किया है that are 63. तो हम winners suppose कर लेते हैं. Let the winners be x. अगर winners x हैं तो the participants who did not win वो जाएंगे 63 माइनस x, बिकॉज टोटल 63 है. x जीते हैं तो जीतने वालों को माइनस कर दो, बाकी बचे हुए लूजर्स होंगे. अमाउंट निकाल लेते हैं. सो विनर्स आर गेटिंग 100 रुपीज पर विनर. टोटल x विनर्स हैं, 100 रुपीज मिल रहे हैं एक विनर को. तो 100x, इतने पैसे तो हमने विनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिए. अब लूजर्स के भी निकाल लेते हैं. Number of losers are 63 minus x and one loser is getting 25 rupees. तो जब ब्रैकेट ओपन होगा तो 63 is multiplied to 25. मल्टीप्लाई कर लेते हैं. So 63 multiplied by 25. So 5 3s are 15, 5 1 carry, 5 6 is 30 plus 1 31. मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे. 2 3s are 6, 6 2s are 12. We'll add it. 5, 6 plus 1 7, 3 plus 2 5 and 1. So 1575 minus 25x. ये अमाउंट जो है लूजर्स को डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है. तो अब हम टोटल अमाउंट निकाल लेते हैं. So the total amount distributed to winners and losers is 3000 rupees. Winners are getting 100x. So 100x plus losers are getting 1575. 1575 minus 25x. This is the amount losers are getting is equals to 3000. So 100 minus 25, 75x. इज इक्वल्स टू 3000 माइनस, बिकॉज यहाँ पे ये प्लस में तो उधर चढ़ के माइनस में हो जाएगा. 1575 इसको माइनस कर लेते हैं. 3000 माइनस 1575. सो कैरी जाएगा, ये 10 बन गया. दिस विल बिकम 9, दिस विल बिकम 9, दिस विल बिकम 2. सो 10 में से 5 गया 5. 9 minus 7 gives us 2. 9 minus 4 gives us 4. So 2 minus 1 gives us 1. So 75x is equals to 14
to 5. Now 75 is in multiplication, so we'll transfer it in division. So let's divide it. Now 14 is smaller than 75, तो हम 3 numbers को लेके सोचेंगे. 75 1 जा तो छोटा आ रहा है. Let's check 2 जा. So 75 2 जा, 5 2 जा 10, 0 1 carry, 7 2 जा 14 plus 1 15. तो 150 तो ज़्यादा आ रहा है, so we'll take 75 1 जा 75. Let's minus it. Carry 12 minus 5 gives us 7. Here 13 minus 7 will give us 6. Now this 5. Now 75 9 is 675. So is the required value, that is 19. And in a question they were asking find the number of winners, और हमने winners को x suppose किया था जिसकी value आई है 19. So here your exercise is completed. I hope this was helpful for you. If you are finding my videos helpful, please like, share and subscribe. Thanks for watching.